Pakistan is among the top 10 countries in the world that are most affected by climate change. Pakistan is highly vulnerable to climate change due to its geographic location, high dependence on agriculture and water resources, and weak systems of emergency preparedness. This leaves a sizable portion of the population socially and economically marginalized. Ranking 153rd out of the 156 countries on the Gender Parity Index, a strain on resources and increase in vulnerabilities bears a significant negative impact on gender outcomes. Given the impact climate change has on the availability of resources, there is a particular need for dialogue on the intersections between climate change and sexual and reproductive health in the context of Pakistan and its provinces. Given the disproportionate impact on women and girls, approaches also must take a gendered lens and build in interventions that reduce gender inequities and challenge harmful norms. तो अडेप्टेशन की बात भी एज अ डिज़ास्टर मेजर होता है, डिज़ास्टर कोपिंग मेजरमेंट के तौर पे होता है। हमारे फिशर फोक में जो मर्द हजरात हैं वो जब जाते हैं अपने बोट्स लेके तो 2-2 महीने का राशन लेके फिर वो गए हुए होते हैं। पीछे औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग या डिसेबल्ड जो होते हैं वो घर पे होते हैं। जनरली जो फिशरमैन हैं वो कर्जे में जकड़े हुए होते हैं। अच्छा, कोई वजह हो गई, कोई समंदरी या तो तूफ़ान आ गया या वहाँ पे चूँकि सरहद नहीं है, आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के जो माहीगीर हैं वो एक दूसरे की एक तरह से हद क्रॉस करते हैं। दानिस्ता ज़रूरी नहीं, लेकिन वो मछली के पीछे जा रहे हैं। वो वहाँ गई और आपकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने देखा कि ये तो हमारा इलाका है, उनको पकड़ के उनको उधर बंद कर दिया हमारे वालों को, और उनके इधर बंद हो गए। तमाम बर्डन इन ख़वातीन पे होता था जो माहीगीरों की बस्ती में हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहला बर्डन उनके लिए क्या होता था? वो कर्ज़ जो देने वाले थे, लोन शार्क्स, वो आ जाते थे, उनको उनसे डील करना पड़ता था, जबकि नॉर्मली उन ख़वातीन की उनके साथ कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं होती थी। तो अब वो जो है लोन शार्क्स उनके ऊपर, वो एक उनके ऊपर बर्डन होता था। और उनके आई डोंट वांट टू अनरावल कि क्या क्या उसके साथ फिर उसकी रैमिफिकेशंस होती हैं। ये हमें जो सोसाइटी में हमारे यहाँ जो एक मजबूर तबका होता है, उनकी मजबूरी से किस तरह से लोग फ़ायदा उठाते हैं, मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। वी एज ए नेशन बिलीव इन थिंग्स विच आर ऑप्टिक बेस्ड, लेकिन हवा में क्या चल रहा है वो लोगों को नज़र नहीं आता। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से उस तरीके की प्रायोरिटी एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान भर में नहीं मिली। बट थैंक्स टू दी अफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो अब एक आम आदमी फेस कर रहा है, तो वो रियलाइज़ करता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ ए थ्रेट टू ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल एट रिस्क। काश हमने अच्छे शहरी होने का सबूत दिया होता और हमने वो रुकावटें क्रिएट नहीं की होती तो शायद मेरे आपके घरों में पानी नहीं आया होता। जो लोग वहाँ पर बैठ गए हैं, कुछ लोग इंक्रोचमेंट की वजह से बैठे हैं, कुछ लोग बाय वे ऑफ सम डॉक्यूमेंट बैठ गए हैं जो कि किसी न किसी वक्त पे गवर्नमेंट ने इशू किया था, मैंने अपनी पावर को गलत एक्सरसाइज किया या फॉर वट एवर रीज़न वो बैठ गए हैं। लेकिन हमें फ़ैसला ये करने की ज़रूरत है कि डू वी हैव टू लुक एट द स्मॉलर पिक्चर और द बिगर पिक्चर, कि एनवायरनमेंट ख़राब इसलिए हुई कि आपने फॉरेस्ट कवर ख़त्म कर दिया। In the same way as the environmental, the ecology of area to area of Sindh is different. The whole coastline is also different. Marshlands hain, dry portions hain, creeks hain, and then when you start coming inland, it's different. Sindh में फिर भी ज़रा ज़्यादा औरत नज़र आ जाती है because we also have a very large Hindu population which work, where the women work. तो जब खेतों में आपको काम करते हुए औरतें नज़र आती हैं यहाँ सिंध में, तो it's mostly the Hindu women. You won't find the Muslim women working in the field. Daily wage का option बहुत कम हो जाता है. So then they are entirely dependent on land, either from scavenging or from growing. Why climate change needs to be at the center of all work and why women need to be at the center of climate change work. Recognizing the challenges that Pakistan faces, it is imperative that an intersectoral approach to climate change is adopted for improved outcomes for the women and girls of Pakistan. Everything that we talk about in terms of
potential climate action is so divorced from everything else, which shouldn't be the case, because mitigation means that you are more and more heavily moving towards renewable energy as your energy source, and then coal and oil and gas جو ہم ابھی استعمال کرتے ہیں. رائٹ, اڈیپٹیشن مینس کہ آپ ایسی اسٹریٹجیز لے آئیں جس سے آپ کی پانی کی کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یا جو آپ کی ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں اسی کو ہم بہتر طریقے سے مینیج کریں. بٹ the point is you will have somebody else talking about water conservation and somebody completely else. So Ministry of Energy will talk about renewable energies with the Alternative Energy Development Board. Sindh Energy جو پروجیکٹ ہے وہ بات کرے گا رینیوبل انرجیز کی, اور جو ایگریکلچر والے ہیں وہ بات کریں گے کیا نام ہے اس کا, پانی کی کنزرویشن کی, اور جو فارسٹری والا ہے یا وائلڈ لائف والا ہے وہ بات کرے گا درخت لگانے کی. And then so you know the fact that all of these departments are so divorced from each other, they need to be sitting together and working out a collective strategy for the province, and then bringing in the best kind of minds and the right kind of people to actually implement it. Climate change جو ہے وہ بیسیکلی افیکٹ میرے خیال میں سب سیکٹرز کو کرتا ہے. کہیں اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے اور کہیں اس کا انڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے. اچھا, پریویسلی جو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا تھا اور جو ہم سروسز دے رہے تھے وہ اسینشیل سروسز میں نہیں تھا. اب ناؤ یہ اسینشیل سروسز کا پارٹ ہو گیا ہے, اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کو وہی پرائرٹی ہم دے رہے ہیں جو دوسرے اسینشیل سروس والے ڈپارٹمنٹس کو ہم دے رہے ہیں. کلائمیٹ چینج زیادہ تر جو ہمارے ہاں جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کلائمیٹ کی حد تک ہی ہے, لیکن جہاں میں اس کو سمجھتا ہوں وہ انڈائریکٹلی پوری ساری آپ کی سب چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. اس سے ایکویلٹی, پاورٹی, ساری چیزیں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنکڈ اپ ہیں, اور وہ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی سب چیزوں کو افیکٹ کرتی ہیں. اچھا, کیونکہ ہمارا جو ہے سروس دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں ہمیں پرائرٹائز اور یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ جس میں ہم اس پیس کے حساب سے چل سکیں جس پیس کے ساتھ جو ہے اسینشیل سروسز کو چلنا چاہیے. Introduce and pilot a project in Sindh, leverage the potential of the indigenous knowledge of women and develop women resilience that explore a woman's role in their household and their work, which is mostly agricultural work, or bringing water, from very far away. How can we come up with solutions that makes life easier for women, which makes it easier for them to access resources, to improve their reproductive health, to have more reproductive health choices, and then eventually more economic opportunities and self-growth opportunities also.